Screen? Yes, sir. Okay, fine. So let us start the session. So welcome you all. So we are going to start the session. The session objective is that we are going to take up some important questions from grade 10 chemistry. Okay, some questions which are practically required. Okay, so without wasting any time, we are going to start the session. So here is the next screen on your, you can see the screen. So this all the presentation it is developed by the experienced teachers from Knowledge Pulse. So that is the acknowledgement we want to give, and this is the application most of you have downloaded and doing the tests also. So if someone has not downloaded or they have not taken up, they can do so. You can even scan the code and then move forward. Okay, so let us take up further part to that. If someone is not knowing that, I will share the link further at the last. Okay, so first and the foremost question to you is, how are you presently? What is your feeling? So your feeling should be happy feeling, then only we can learn. Okay, so the rule number 1 is on your screen now. Rule number 1 is on screen, that is, don't give in without a fight. Okay, so you cannot just see paper overall 100 marks is coming because of the options. Okay, so that's why it's chemical properties. I want your quick response in the chat box. Okay, so you are very clear about how to calculate the group number. Group number is equal to number of valence electron or 10 plus the number of valence electron if valence electron are more than 2. If valence electron are more than 2, then we add 10 plus. Similarly, period. How we have to calculate period? When we are writing electronic configuration, number of shells is equal to period. Fine. So for example, magnesium is my element and atomic number is 12. So electronic configuration is 282. So there are 3 shells, so third period. Similarly, if valence electron 2, so it's group 2 element. If it could be aluminium, valence electron 3, so 10 plus 3, 13. This is way how we can able to find the group and period. I will be a little bit faster because this we are doing revision. This we are not taking up the question. Okay, question is in front of you. So kindly tell your answer in the chat box fastly. Okay, if an element A belongs to period 3 and group 2, then it will have. Please write the. Okay, so I can be take up in bilingual as you have told. Okay, ठीक है. So fine, I could be bilingual चलते हैं. So if an element A belongs to period 3 and group 2, तो कौन सा option है इसका? B. Okay, let us check whether you are right or not. So A. So most of the students have written A. So this is the right answer. Very good, very nice answer. Okay. Second question पे चलते हैं. Second question क्या है? Element Z has atomic number 16. उसका आंसर हमने बताना कि पीरियड कौन सा है. So पीरियड कौन सा होगा उसका? 286. So third period. So it's clear already. I'm not saying you to answer. So period number 3. Group कौन सा है इसका? 286. Which would be group? Can you please tell? 286. Which will be group? Which group? 16 group. Absolutely right. Absolutely right. तो मेटल है कि नॉन मेटल है? आपको बस मेन ध्यान में ये रखना है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं. वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 1 है, 2 है, 3 है तो मेटल है. अगर 3 से ज्यादा है तो नॉन मेटल है. सो ऑफ कोर्स इट इज नॉन मेटल. ओके फाइन. नेक्स्ट पॉइंट इज फार्मूला Z और H का. अभी Z की वैलेंसी कितनी है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, वैलेंसी होगी 2. H की वैलेंसी कितनी होती है? 1. सो आपने some students they will write H2Z and some students they will write ZH2. Which is right? Which is right? So which is negative valency? You have to check which is negative valency. Negative valency is for Z. So you have to write H2Z, not ZH2. Please keep in mind this thing. Okay. What type of compound? What type of compound means whether it's ionic or covalent. Whether it is ionic or covalent. So fine. So these are the answers. So if you have solved it correctly, that's great. If not, then also great. Okay. So because everyone is learner here, everything, every person. So now we have understood क्या हमने सीखा. पीरियड नंबर कैसे फाइंड आउट करना है, ग्रुप नंबर कैसे फाइंड आउट करना है. पीरियड नंबर बहुत ही आसान है. आप उसकी जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए. जितने शेल्स हैं वही पीरियड है. मान लो 2 शेल है तो सेकंड पीरियड है, 3 शेल है तो 4 थर्ड पीरियड है, 4 है तो 4, जैसे कैल्शियम है. ठीक है. उसके बाद में ग्रुप की बात है. वैलेंस अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है. वैलेंस इलेक्ट्रॉन ढूंढने हैं. अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो ग्रुप नंबर 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो ग्रुप नंबर 2, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है
तो ग्रुप नंबर 10 प्लस 3 13। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है, फॉर एग्जांपल नियोन के केस में 8 है, 10 प्लस 8 18। इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हो। वैलेंसी का क्या फार्मूला है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वो वैलेंसी होती है अगर उसकी वैलेंसी 1 2 3 हो। अगर 4 है या 4 से ज्यादा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 8 माइनस 4 करके हमने वैलेंसी निकालनी है, जैसे कि हमने जेड के केस में निकाली है। इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ रहे थे 6, तो 8 माइनस 6 करके वैलेंसी आ गई 2। ठीक है, आई होपफुली दिस इज क्लियर टू यू। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। अभी क्या है, थोड़ा थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट एक बार आपको बता देता हूँ, बिकॉज दीज आर द प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। एटॉमिक साइज, आयनेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर, दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये एटॉमिक साइज का ऑपोजिट है सारे। अगर आपको पीरियड और ग्रुप में पता चल गया, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल इफ यू नो कि पीरियड्स आर हॉरिजॉन्टल रोज आर पीरियड 7 एंड ग्रुप्स आर नोन एज वर्टिकल कॉलम्स। 18 वर्टिकल कॉलम्स दैट आर कॉल्ड ग्रुप्स। तो अभी नेक्स्ट केस क्या है हमारा कि डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं तो वहां पे शेल्स बढ़ते हैं। शेल्स आर इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप, सो शेल्स इंक्रीज कर रहे हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा। बस तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि ग्रुप में एटॉमिक साइज बढ़ता है। इफ यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दैट आर पीरियड, 7 periods are there because number of shells remain same, relative nuclear charge increasing, so atomic size decrease करता है। बस ये फंडामेंटल आपको याद रखना है, क्लियर होना चाहिए कि ग्रुप में एटॉमिक साइज बढ़ता है और पीरियड में एटॉमिक साइज कम होता है। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद क्लियर होने के बाद आयनेशन एनर्जी एटॉमिक साइज के ऑपोजिट है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑपोजिट है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑपोजिट है। ये तीन प्रॉपर्टी एटॉमिक साइज के ऑपोजिट है। ठीक है, अभी मेटल किसको बोलते हैं, जो लूजर है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है। इलेक्ट्रॉन लूज वही करेगा जिसका एटॉमिक साइज ज्यादा है। इसका मतलब डाउन द ग्रुप जाओगे तो मेटालिक करैक्टर इंक्रीज करेगा। लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो वो तो हमें पता ही है कि लेफ्ट हैंड साइड में मेटल है, राइट हैंड साइड में नॉन मेटल है, तो उसका तो याद रखने की जरूरत ही नहीं है कि मेटालिक करैक्टर डिक्रीज करता है और नॉन मेटालिक करैक्टर इंक्रीज करता है लेफ्ट टू राइट। बस ये थोड़े से कॉन्सेप्ट है, आपको पता होना चाहिए। अभी कौन मुझे बताएगा, कौन मुझे फैसिलिटेट करेगा कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन होते हैं, मेटल्स होते हैं कि नॉन मेटल्स होते हैं? कैन यू राइट इन द चैट बॉक्स प्लीज? Yes, metals are reducing agent. क्यों? Because they are having tendency to lose electron. They are having metals. They are having 1, 2, 3 valence electron that are reducing character. Okay, अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज की बात करें, पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, तो जो पोटाशियम, सोडियम, ये सारे जो है रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। तो इसी के कारण अच्छे फास्ट रिएक्टिव होने के कारण, रिड्यूसिंग एजेंट होने के कारण, इट इज हैविंग वेरी ग्रेट एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं, ऑक्सीजन के साथ बहुत एफिनिटी है। तो इसको प्योरीफाई करने के लिए हम ओनली इलेक्ट्रोलिसिस मींस यूज करते हैं। देखो इलेक्ट्रोलिसिस क्यों करते हैं, पोटाशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, ये जो मेथड्स है सिंपल रिडक्शन के लिए यूज हो ही नहीं सकते। वी कैन नॉट यूज सिंपल रिडक्शन टू प्योरीफाई दैट, वी नीड टू यूज इलेक्ट्रोलिसिस। सो इट मींस बिकॉज इट्स हैविंग ग्रेट एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, ओके, बिकॉज दे आर वेरी रिएक्टिव। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। अभी नेक्स्ट पार्ट पे हम जाएं तो ये हमारी एक स्लाइड आ गई है, इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में आपको बताया। मेटल्स आर वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, नॉन मेटल्स आर वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैं एक शॉर्ट फॉर्म में आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। मेटल्स की टेंडेंसी लूज इलेक्ट्रॉन करने की है, मींस लूज और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। सो विच सब्सटेंस अंडरगो ऑक्सीडेशन, दे आर एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट। Similarly, opposite to that, a substance which gains electron, it undergo reduction, and those substances which undergo reduction act as oxidizing agent. बहुत अच्छी एग्जांपल हमारे पास ओजोन है। ओजोन इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। O2 भी है, O2 इज आल्सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लोरीन भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। याद कैसे रहे? बिकॉज क्लोरीन, यू सी, क्लोरीन इज यूज्ड इन डिसइंफेक्शन। आप पानी को साफ करते हैं जब क्लोरीन यूज करते हो, क्लोरीनेशन करते हो उसकी। तो क्लोरीनेशन क्यों करते हैं? बिकॉज इट्स नेचर इज ऑक्सीडाइजिंग नेचर। हाइड्रोजन पेरोक्साइड विच इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, दोनों प्रॉपर्टीज हैं उसकी, याद रखना है। KMnO4 वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। जिंक HCl वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। सो ये थोड़ी छोटी चीजें आपको बताना चाहिए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, Pb3O4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, MnO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें, जिंक HCl रिड्यूसिंग एजेंट है, सोडियम अल्कोहल रिड्यूसिंग एजेंट है। So these are lithium aluminum hydride also reducing agent। आपको खैर उसकी जरूरत नहीं है, ऑर्गेनिक में थोड़ी सी जरूरत है। ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके सामने है, तो मैं आपको सारे क्वेश्चंस नहीं करवा पाऊंगा अभी। आप मुझे बस लास्ट वाला क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी,
इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का ऑर्डर आपने लगाना है फोर्थ वाले क्वेश्चन का, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मतलब कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किसकी है। डाउन द ग्रुप बात करें वैसे तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होनी चाहिए थी, बिकॉज एटॉमिक साइज ज्यादा हो रहा है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होनी चाहिए थी। सो इट मींस इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होनी चाहिए थी, आयोडीन की मिनिमम होनी चाहिए, लेकिन अभी इंक्रीजिंग पूछा उसने। इंक्रीजिंग मींस आयोडीन की मिनिमम स्टूडेंट्स ने अभी आपके रिस्पॉन्सेज चैट बॉक्स में दिखाई दे रही हैं। तो लास्ट में कुछ स्टूडेंट्स ने फ्लोरीन लिखा है, कुछ स्टूडेंट्स ने क्लोरीन लिखा है, तो आंसर क्या सही है? फ्लोरीन सबसे कम है कि क्लोरीन सबसे कम है? या हम बोल सकते हैं कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी फ्लोरीन से ज्यादा है। क्यों? व्हाई? दिस इज द क्वेश्चन वी वांट टू डिस्कस। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी फ्लोरीन से ज्यादा है, उसका साइज कम है, फ्लोरीन का साइज कम है, तब भी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्लोरीन की ज्यादा है। देयर इज ए रीजन फॉर दैट। रीजन इज दैट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऑल आर हैविंग 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसमें, और लेकिन साइज छोटा है। किसका साइज छोटा है? फ्लोरीन साइज इज स्मॉलर। फ्लोरीन साइज जब स्मॉल है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर देयर आर इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस, देयरफॉर न्यू इनकमिंग इलेक्ट्रॉन वो डिफिकल्टी होती है उसको रिपल्शंस होने के कारण, तो नया इलेक्ट्रॉन ऐड करने में हमें प्रॉब्लम है, which is a definition of electron affinity. It is the amount of energy released when an electron is added to isolated neutral gaseous atom to form negative ion. So the point here is कि साइज छोटा होने के कारण इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस होती हैं। किसमें होती हैं? फ्लोरीन के केस में। क्लोरीन में वो रिपल्शंस नहीं होती, इसलिए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है क्लोरीन की ज्यादा है और फ्लोरीन की कम है। सो प्लीज कीप इन माइंड ऑल दिस थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम जाएंगे, आयनेशन एनर्जी ऑफ द एलिमेंट इंक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड में इंक्रीज हो रही है आयनेशन। वेरी सिंपल है, एटॉमिक साइज के हिसाब से बता दीजिए। पीरियड में एटॉमिक साइज इट इज डिक्रीजिंग एंड आयनेशन एनर्जी इंक्रीजिंग। Alkali metals are very good reducing agent because they are having tendency to lose electron. Because they are having tendency to lose electron, therefore it undergo oxidation and act as reducing agent. यही वर्ड आपने लिखने हैं, तो आपके आंसर, आपके मार्क्स उसके फुल फ्लेज आए। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट जाते हैं। मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ, फास्ट इसलिए चल रहा हूँ कि बेटा क्वेश्चंस नहीं कवर होंगे। ठीक है, और जो बच्चे हो अभी आप रिवीजन हो चुकी है आपकी सारी, तो इसलिए कई क्वेश्चन मैं छोड़ता जाऊंगा, आगे हम चलेंगे। ठीक है, आयनेशन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की आप डेफिनेशन कर सकते हो, मैं ज्यादा इसमें नहीं बताऊंगा। इसमें आपने आइसोलेटेड वर्ड यूज करना है, न्यूट्रल वर्ड यूज करना है, और एनर्जी रिक्वायर्ड और एनर्जी रिलीज्ड। आयनेशन एनर्जी के लिए रिक्वायर्ड और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के लिए एनर्जी रिलीज, दिस थिंग शुड बी देयर। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस हैं मैं स्किप करूंगा क्योंकि ज्यादा सारे क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट ओके, लेट अस टेक द क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन। Place 3 element फ्लोरीन, बेरिलियम एंड नाइट्रोजन इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी। अभी बताइए कि इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी में लगाइए बेरिलियम, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, लगाओ फटाफट। डू दिस क्वेश्चन। Beryllium, nitrogen, fluorine. Beryllium, nitrogen, fluorine. Okay, fine. Let us go with the next question. If someone can speak also, that would be great. Which one of the above elements belongs to halogen series? कौन सा halogen series वाला? Fluorine. 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 Yeah, this is the answer is there on your screen. So it is okay. So we can move ahead without wasting much time. So next part. So these are the MCQ based questions. The non-metallic character of the elements का क्या status होगा? Left to right. Non-metallic character left to right. Very simple. It increase. Yes. Increase. Now next question is the electron activity. Electron activity किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रही है? Whether valence electron means electron activity in the left to right. Electron activity Increase. it is increasing. Okay, so electron activity will increase. Fine. So ये आपके आंसर हो गए, तो पता है आपको, आसान है, कोई बात नहीं. So next question is ionization energy. What is the trend left to right? Okay, goes up and down, decreases. Okay, Increases. All questions are in respect to left to right. Okay, Increases. ionization energy will, because atomic size is decreasing, increases. Okay, atomic size left to right. Atomic size, yeah, decrease. Okay, if you go for that group 1 to 7, please see this question very clearly. See this question. The electron affinity of the elements
in group 1 to 7, left to right, group 1 to 7, electron affinity of the elements in group 1 to 7. What happens in group 1 to 7 for the electron affinity? What? Increases. It will be Decreasing. See, actually, this question is a vague question actually. Why vague question we say? Because if you move up, अब ये देखो क्वेश्चन, इसमें क्या लिखा है? मूविंग लेफ्ट टू राइट, ठीक है? जो 4-5 क्वेश्चन उसने पूछे थे वो लेफ्ट टू राइट के पूछ लिए. अभी ये क्वेश्चन पूछ लिया उसने इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ द एलिमेंट्स इन ग्रुप 1 to 7. स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो गए. स्टूडेंट्स कंफ्यूज क्यों हो गए? उनको पता नहीं लग रहा कि भैया कि ग्रुप में बताना है आंसर के पीरियड में बताना है. तो ये प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है? तो इसमें आपको मतलब कि बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जाएगा और आपको आइडिया क्लियर होना चाहिए कि क्या आइडिया है, ठीक है? तो उसमें बेसिकली क्या है, ग्रुप का ही आंसर देना पड़ेगा. जो पहले 4 क्वेश्चन थे वो अलग थे, 5th क्वेश्चन अलग होना चाहिए, ठीक है? अदरवाइज जो आप सोच रहे हो वो आंसर सही होगा आपका कॉन्सेप्ट के हिसाब से. अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है कभी, अभी ऐसा कोई क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाता है तो उसको एक्सप्लेन करके लिख दिया करो, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? ये वेग क्वेश्चन था इसलिए आपको थोड़ा सा दिक्कत आती है उसमें, ठीक है? जो ऊपर वाले 4 क्वेश्चन लेफ्ट टू राइट वाले थे और जो नीचे वाला क्वेश्चन था वो जो है अपना ग्रुप का क्वेश्चन था, ठीक है? नाउ सो नेक्स्ट, द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर. Tell the answer. Atomic number. Yeah. Numbers. Right. Periodic. Yes, correctly. Atomic number. Fine. Moving across a dash, the element shows increasing dash character. Moving across a dash of the periodic table, the element shows increasing dash character. Periodic non-metallic. Period. Yeah, it is period. Moving across a period, and the element shows non-metallic. Yes, absolutely right. Absolutely right answer. So let us. Okay, sorry. Okay, here. So non-metallic as you have done. Good. The next elements at that bottom of a group would be expected to show high metallic character or low, less or more. High. Yeah. Okay. The properties of the group of elements are similar because they have similar electronic configuration, number of outer electrons, and atomic number. Very crucial question. Electronic configuration. Number of outer electrons. Please wait and give answer. Think. Electronic configuration. Think. That's why I'm telling. It's very. Number of outer electrons. Yeah, it is. See, listen carefully. Now, chlorine are having similar properties, right? And fluorine is 2,7 and chlorine is 2,8,7. So their electronic configuration are not same. Their valence electrons are same. So your answer should be number of valence electrons are same or number of outer electrons are same. We cannot say electronic configuration is same. Okay. Otherwise, you should say outer electronic configuration is same. Got my point? This is clear to everyone? This is clear? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Fine. So Yes, next point is here. Okay. So you will be able to take up this question. I will go into the next. Otherwise, some part we will miss very important part. Okay. So this you will do. So now how you are feeling up to now? Up to now what you are feeling? It's okay? Happy? Good. Right. So anyone can tell me what is the key point we taken from the session, this one. Anyone can unmute yourself and speak. Like how to find period, how to find group, what is the trend. Anyone, if you speak, it would be great. Anyone, you can raise hand who wants to speak, I will tell. Yeah. Anyone who wants. Yeah. Yes. Manimoy Karamkar. Yes, please tell. What do you learn till now? Yes, sir. Actually, we learned about some basic trends in the periodic table when we move from left to right across a period or from the across a period and from top to bottom across in a group. And we also learned how to find the number of periods by counting the shells and number of cells and number of valence electrons. Right. The number of valence electrons would give us the group, and if the valence, if we find the valence, if it is greater than equal to 4, then we should do it like this 8 minus 4 like that. Absolutely. 8 minus number of electrons, and if it is less than 4, then it can be as simple as that. Right.
Thank you very much. Thank you for your inputs. So the second commandment of life is, first was there, we should keep on fighting for the win. That was the first. Second was, do not learn how to react, learn how to respond. So our importance is not only simply just immediately we will fastly or react. Okay, teacher will say something, immediately react करेंगे. Father कोई बोलेंगे तो immediately react करेंगे. Mother बोलेगी तो immediately react नहीं करना, respond करना. ठीक है, आगे चलते हैं. Second chapter हमारा chemical bonding. So periodic table, yeah. Sir, actually, I had a doubt. Okay. For say, if we take chlorine monoxide or chlorine heptoxide, sir, in that case, will chlorine be oxidizing agent or reduction agent? Okay, fine. So now, okay, very good question. Very good question. Thank you for asking. So you have taken Cl2O7, right? Cl2O7, when you will take Cl2O7, which is more electronegative, oxygen or chlorine? Sorry, sir. Which is more electronegative? Chlorine ज्यादा electronegative है कि oxygen है इस केस में? Oxygen. Oxygen. Yes, sir. Yes, sir. Because you see the basic structure of compound. Compound का structure क्या होता है? Cl2O7. तो O जो है anion है और chlorine cation है, ऐसे ही होगा ना? तो chlorine if it is cation तो उसकी oxidation state, मैं वैलेंसी नहीं बोल रहा क्योंकि क्या ना +1 में आप पढ़ोगे वैलेंसी नहीं बोलते, ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं. अगर आपके हिसाब से 7 बोल लीजिए आप वैलेंसी, ठीक है. क्लोरीन की 7 वैलेंसी है, ठीक है. मैक्सिमम वैलेंसी ऑफ क्लोरीन कितनी हो सकती है? मैक्सिमम प्लस में -1 to 7. इज इट राइट? -1 to 7. 7 से ऊपर जा सकती है? नो सर, नो सर. 7 से कम हो सकती है. अगर मैं कहूं Cl2O3, ClO2, Cl2 में +4 होगी क्लोरीन. सर Cl2 हो सकता है. Cl2 तो हो गया ना बेटा. Cl2 मीन्स +1. यस सर. सो 7 से +1 हो सकती है? नो सर. नहीं, 7 से +1 तो होगी ना बेटा. जब भी तो बताया आपने Cl2O बताया ना आपने. हाँ सर. Cl2O के हिसाब से क्लोरीन की +1 होगी. तो 7 से +1 की तरफ झिक गया. अगर वैलेंसी कम होती है तो इसका मतलब वो रिडक्शन हो रही है उसकी. अगर किसी चीज की वैलेंसी कम हो रही है तो उसका मतलब क्या है? रिडक्शन. एंड इट विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो इस केस में जो आपने बताया Cl2O7 के केस में इट इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. इज इट क्लियर? Sir, that means chlorine is an oxidizing agent. Yes, chlorine is oxidizing agent and Cl2O7 is also an oxidizing agent because in Cl2O7 it is having valency of +7. +7 valency cannot increase. +7 valency can decrease only. And I will take the example of now sodium. Okay, so now we will take the example of sodium. Sodium जो है, sodium if it is losing electron, Na के ऊपर कोई चार्ज नहीं था, ठीक है, नो चार्ज, जीरो वैलेंसी, Na अकेला है, आइसोलेटेड है. व्हेन इलेक्ट्रॉन इज लॉस्ट इट रीचेस +1, मींस 0 से +1 हो गया. सो उसकी ऑक्सीडेशन होगी, जैसे बोलते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन 0 to 1 एंड देयर इट वाज 7 to 1, वो रिडक्शन था. ठीक है, इसमें ऑक्सीडेशन हुआ Na to Na+, दिस इज एक्टिंग एज ए रिड्यूसिंग एजेंट. और क्लोरीन के केस में जैसे आपने बताया Cl2O7 से क्लोरीन बनना, मतलब कि +7 से 0 बनना, तो उसमें रिडक्शन होगी. तो जिसकी रिडक्शन होती है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिसकी ऑक्सीडेशन होती है वो रिड्यूसिंग एजेंट. होपफुली दिस इज क्लियर. Sir, that means in potassium phosphorus pentachlorate, then we have phosphorus as the oxidizing agent and chlorine as the reducing agent. No. See, listen, what is there? So, for example, you see, take PCl5 changes to PCl3 and Cl2. Let us see this equation. Got it? PCl5 changes to PCl3 and Cl2, right? Got it or not? Here. Now, phosphorus, what is the valency in PCl5? The valency of phosphorus is 5. And 5. Absolutely right. Now, if you go to PCl3, what is the valency of phosphorus there? 3. So 5 changes to 3. Reduction.
So it is reduction. It act as oxidizing agent. Right? Got it? Now you see both case. Now PCl5 उसमें जो क्लोरीन था, what is the valency of chlorine in PCl5? क्लोरीन की बात हो रही है अभी. -1. You have to speak the negative sign also. Okay, this is the beauty of oxidation state. वैलेंसी में हम नेगेटिव पॉजिटिव नहीं बोलते, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट में -1 भी बोलेंगे, 0 भी बोलेंगे, +½ भी बोलेंगे, -½ भी बोलेंगे. ठीक है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं. सो नाउ -1 चेंजेस टू Cl2. जब भी जो भी एलिमेंटल स्टेट होती है, Cl2 इज एन एलिमेंटल स्टेट, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0. गॉट इट? Cl2 दैट ऑक्सीडेशन नंबर इज 0. एलिमेंटल स्टेट का 0 मानते हैं. जैसे सोडियम एलिमेंटल स्टेट में है, वो 0 है. Na+ है तो +1 है. तो -1 से 0 हो गया, क्या हुआ? ऑक्सीडेशन वैलेंसी इंक्रीज हुई कि ऑक्सीडेशन. यस, देयर इज ऑक्सीडेशन. तो वो इट मींस PCl5 की नहीं बात होगी अभी फास्फोरस और क्लोरीन की बात होगी. ठीक है, अगर हम PCl5 इंडिविजुअली लेंगे, PCl5 चेंजेस टू PCl3, तो वो क्या हो गया कि उसकी 5 से 3 होगी, उसकी रिडक्शन होगी, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया. ऐसे करके बोलते हैं. ठीक है, अदरवाइज कोई भी दोनों चीजें इकट्ठी होंगी, ऑक्सीडेशन भी होगी, रिडक्शन भी होगी. इस केस में फास्फोरस की रिडक्शन हो रही है, क्लोरीन की ऑक्सीडेशन हो रही है. दिस इज द मीनिंग. इज इट क्लियर नाउ? Sir, so PCl5 is a reducing agent. No यार, PCl5 कैसे रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा माय डियर? फास्फोरस में 5 वैलेंसी है ना राजे, 5 की 3 होगी वैलेंसी. सो 5 की 3 रिडक्शन हुई तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ ना. तो आप ऐसे बोल सकते हो, फास्फोरस की रिडक्शन हो रही है, क्लोरीन की ऑक्सीडेशन हो रही है. ऐसे करके हम बोल सकते हैं. ठीक है, बट PCl5 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही बोलेंगे. ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन. समवन हैज रिटन. Shall we continue? Because so much time we have spent here. Concept. Yes, sir. Yeah, thank you. So now chemical bonding. Chemical bonding में सिलेबस में अगर हम सिलेबस देखें अपना, तो सिलेबस बहुत ही सिंपल सा सिलेबस है. आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का क्वेश्चन आपको आएगा, इंपॉर्टेंट है. कोऑर्डिनेट बॉन्ड 3 कंपाउंड्स हैं हमारे, हाइड्रोनियम है, हाइड्रोक्सिल है, अमोनियम है. ये तीनों की स्ट्रक्चर आपको अच्छी तरह से बनानी है, वेरी नाइसली. डिफरेंस बिटवीन आयनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट कंपाउंड. So ionic bonds are formed by transference, covalent by sharing. Covalent are of 2 types, polar and non-polar. And if you consider number of bonds, single bond, double bond, triple bond, these are the 3 types, right? Ionic bond, covalent bond. Ionic bond में होती है dissociation. Dissociation में क्या होता है कि separation of ions हो जाती है. ठीक है, जैसे NaCl when dissolved in water, Na+ and Cl negative बन जाते हैं. When NaCl, when you pass heat, when you given heat, laxity, it changes into ions Na+ and Cl negative. But in the case of HCl, which is a covalent compound, it does not take place. There only what is happening is the small charge is coming. +1 or -1 is not coming on HCl. Small plus delta charge on H and minus delta charge on chlorine, that is coming. So this is the difference between HCl and NaCl. Okay, so वो ज्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, अब क्वेश्चंस करते हैं. Ionic bond is formed by transference. Covalent bond is formed by sharing. You can see on the screen, everything is written. Coordinate bond is that when electrons are donated by one and shared by both. तो जब हम म्यूचुअल शेयरिंग की बात करते हैं, तब वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है. तो जब हम electrons are given by one and donated by both, that is called as coordinate bond. और मोस्टली जहां भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं, जैसे कि टेट्रामीन सिल्वर कॉम्प्लेक्स, टेट्रामीन कॉपर कॉम्प्लेक्स, सो उस केस में आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड मिलेंगे. ठीक है, नाउ सो दीज आर सम ऑफ द प्रॉपर्टीज लाइक कंडक्टिविटी, स्ट्रेंथ. आयनिक बॉन्ड ज्यादा स्ट्रेंथ होते हैं, इसलिए उसकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं. कोवेलेंट बॉन्ड गैसेज होते हैं, लिक्विड, जैसे ऑक्सीजन इज अ गैस, डबल बॉन्ड. हाइड्रोजन इज अ गैस, सिंगल बॉन्ड. नाइट्रोजन इज हैविंग ट्रिपल बॉन्ड. ओके, सो दीज आर थिंग्स वी नीड टू. सिमिलरली HCl, HBr, HI, तो ये सारे जो है हाइड्रा एसिड्स हैं. और सब में कोवेलेंट कंपाउंड है, ये पोलर कंपाउंड्स है. वाटर पोलर है, अमोनिया पोलर है. वाई पोलैरिटी इज देयर? बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. अगर डिफरेंस ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 है तो बॉन्ड हो जाता है नॉन पोलर. अगर डिफरेंस ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो पोलर हो जाता है. अगर डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ग्रेटर देन 1.8, 1.8 का फैक्टर है, वो 50% से ज्यादा बॉन्ड आयनिक हो जाता है. जब 1.8 का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ गया उसमें, तो 50% आयनिक, 50% कोवेलेंट.
कोई भी बॉन्ड, नो बॉन्ड इज परफेक्टली आयनिक, परफेक्टली कोवलेंट, परसेंटेज आयनिक करेक्टर आता है उसमें, ठीक है। तो वो आगे का कॉन्सेप्ट है, आपको क्वेश्चंस नहीं आएंगे पेपर में उसमें। लेट अस डू द क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। बॉन्डिंग इन दिस मॉलिक्यूल कैन बी अंडरस्टूड बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड। किसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड है? Ammonium chloride. Yes, absolutely. Ammonium chloride. Very good, very nice. So ammonium chloride is covalent bond. So now question here is कि कार्बन टेट्राक्लोराइड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करता ही नहीं है। क्यों नहीं करता? बिकॉज इट इज No free electrons. कोवलेंट बॉन्ड इज देयर। बेटा आप यू हैव टू वेरी क्लियरली स्पेसिफाई कोवलेंट कौन सा कोवलेंट? नॉन पोलर है। इट डज नॉट गिव आयंस, इट एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल्स। सो ये वर्ड आपने यूज करने हैं आपके आंसर में, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होना वो ठीक है आपका बात, बट यू हैव टू गिव it is not having free electron, that is acceptable, very good answer. Along with that, please add that it is a non-polar covalent compound and it contains only molecules. Okay, right? Now methane का structure है आपको आता ही होगा, so this is simple. So question to you is how many bond pair it is having? How many bond pair? How many lone pair? 4 bond pair. Yes. 4 bond pair. Yes. We can continue. No lone pair. Now let us go with this question. ये अच्छा क्वेश्चन है, ये हम कर लेते हैं। Element consist of molecules. L consist of molecules. L में molecules है. What type of bonding is present? कौन सी bonding होगी? Covalent. Yeah, covalent. Let us go. L is heated with iron metal. ये हो सकता है आपको क्वेश्चन ना आए क्योंकि साल्ट की प्रेपरेशन आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में साल्ट की प्रेपरेशन नहीं है, मतलब कि ये पर्टिकुलर साल्ट की FeCl3 की, तो इसलिए ये नहीं आएगा। L is heated with iron metal. It is forms a compound FeL. What chemical term would you use to describe the change undergone? आपने बताना कि चेंज क्या है, ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है, बताओ। Fe plus L give rise to FeL. What is the change? Oxidation or reduction? Reduction. No, इसने पूछा L की चेंज पूछा इसने। हाँ, आप मतलब सोच के बताओ, हो सकता है रिडक्शन हो, बट सोच के बताओ। Oxidation. ये मुझे नहीं पता अभी सोचो। Fe if it is alone then 0. If L is alone then 0. Now if you take FeL, what is the valency of L? What is the valency of Fe? Please tell. Because it is from it is now oxidation state is 1. No. First you have to, for which oxidation state is 1? For which? L. So Fe, ferrous or ferric? Actually, we don't know whether it is FeCl3. बेटा जो बंदे ऐसे करते हैं ना उनको ध्यान मत दिया करो, वो पागल तरह के बंदे होते हैं, जस्ट इग्नोर। ओके, FeL में क्या है बेटा? FeCl3 होगा इसमें। अगर Cl2 भी होता है मान लो, वैसे ये कंपाउंड Cl3 है, ठीक है, बट Cl2 भी अगर होता है तो व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन? व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन? प्लीज टेल। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब वैलेंसी बोलो। Iron is +2 and L is -1. Iron is +2. Yes. अगर आप FeCl2 लोगे, if FeCl2 you are taking, iron is +2 and chlorine is -1. If you are taking FeCl3, then iron is +3 and Cl is -1. ठीक है? Now you see, they asked change undergone by L. L was having previously 0 valency. मैंने आपको पहले बताया एलिमेंटल स्टेट में 0 होती है, 0 से -1 हो गया, तो व्हाट हैपेंस? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन? यस, Reduction. that's all. If you come to know this answer, it means done. No beta reduction it will be. Okay, so fine. So money boy, I think you have got it now. So this was an important question, so it was good to take. Now let us see what is the answer for this. Question number 5. The molecule containing triple covalent bond. Nitrogen. So sometimes students just confuse with ammonia. Ammonia is 3 single bond, not triple bond. Okay, so this we should keep in mind. Formation of ions किस में होगा? Ionization or dissociation? Ionization. Okay. Ionization. Fine, very good. So now let us go with the next question. Covalent compound exist as gases, liquid or soft solid. Why?
So you know this, you have to give the answer on the basis of bonding. Bonding, which type of bonding is there? That is having molecular type of bonding or weak forces. This word we should use. Weak force. No need to write van der Waals forces. Weak van der Waals forces. See students, your van der Waals forces are not there in your syllabus. You need not write. If you are writing, it's okay. Marks they will give. But there is no point of writing that. No, my dear. This also we should not write less electrostatic force. This is the wrong answer. No marks will be given for that. Okay. So you must write weak forces of attraction. This is the answer should be there. Okay. Weak forces of attraction. Because these are molecular forces basically. Neither you studied molecular forces, nor you studied about the van der Waals forces. So you need not to mention over there. You can simply say that it is having weak forces of interaction or weak forces of attraction. Okay. Next, bond formed by shared pair of electron with both electrons coming from the same atom. Yes. So you can see the answers. Now I am flashing the answers. So these are the answers. Okay. Because they contain weak covalent bonds. This answer should be there for the second part. And ionization is the answer for that. Okay. Ionization. Ionization, who is helping in the ionization? For example, if you are taking HCl water is helping in the ionization. See, if I will give you the question, one question I will give. A dry litmus is brought near to HCl gas. What will be the change? What is your answer? No change. No change. No change. So if I say dry litmus, if I say wet litmus is brought near HCl gas, then what is the answer? Blue litmus will turn red. It will change red. Yes. Moist blue litmus will change into red, or moist red litmus remains red. So this is the importance of the moist. Moist means water is helping in the ionization. Okay, fine. So now next question we are going to take up. So this is the question. This I think you know. Question 9th you need not to do. 10th question. Which of the following is not a typical property? Not a typical property. Can you see the options? High melting point, conducts electricity in the molten and in the aqueous state, insoluble in water. They exist as oppositely charged ion even in the solid state. What would be the answer? They contain electrostatic force of attraction. Anji? No. Your last 10th question we have to say. Insoluble in water. B. It conducts electricity in the molten and aqueous state. This question was there in the exam. See, this is a very confusing question. Which of the following is not a typical property of any compound? Not a typical. Okay. So they are insoluble in water. They are insoluble. Because we see first and second is not there, right? Insoluble in water. See, this high melting point conducts electricity in the molten aqueous state. So this now my point is third and fourth option was there mainly. They exist as opposite charge ions even in solid state. Is it? They exist as opposite charge ions even in the solid state. It is possible? Think. Yes, sir. Yes. So they exist as opposite charge ions even in the solid state. So that will be the answer. Means C should be the answer. They are insoluble in water. I also do believe that C should be the answer, because they exist as opposite charge ions even in the solid state. So it's opposite charge ions. Okay, so they are insoluble. These two questions, sometime I am telling you, this type of questions are coming, but normally it is not due to the paper setter. It is actually by chance only comes into play. So in this type of questions, when there is a vague answer, means their critical examination is there, so there is a chance that you will get the marks. Okay, always happens like that. So I feel this answer should be they are insoluble in water. This is also one of the answer. Not a typical property of any compound. So no, C will not come. This is not a typical property of any compound, insoluble in water. So as just think of the case. I told you that no substance is perfectly ionic and perfectly covalent. This we have told. No? Okay. So if you see in that case, they are insoluble in water.
Means if it is a 50% ionic, 50% covalent, there is a chance that a substance will be less soluble. For example, if you take barium sulfate, which type of compound it is? Barium sulfate. Ionic. So whether it is soluble in water? It is forming precipitate. So it is not soluble, no? Insoluble. It is insoluble. So see, this type of questions are sometimes coming. Okay. It is a typical property. So this is the main thing. Sometimes it happens. So I cannot take, you can just see that they may accept both answers, C and D. Okay. So they may accept. So whenever this type of questions are coming, because as per their board, no, they have given this answer. They exist as opposite charge ion even in the solid state. So they have given this option. How D answer is there? How D? But C, D, both I feel that will be acceptable. This is a vague question. It's not exactly the question which should be. Okay. So don't. Sir, I understood that C is there, but how D is there, sir? No, that's what I'm telling. No. So this C, they exist as opposite charge and even the solid state. So C, they exist as opposite charge ions even in the solid state. Now, if a solid state is there, solid state, if you pass electricity, let us say, what will happen? No current. No. If you pass electricity in the molten NaCl, it is not forming ions. It is forming. Yes. That is there, no? So they can form ions also in the passing electricity. So this type of means you just don't take it that much seriousness, because this type of questions they will avoid putting, okay, in the exam. Now I want to tell you this thing. Here in the structure, if this structure, sometimes students are doing is they are showing bond also and they are showing electrons also. This is wrong. Now you see why these two electrons are kept as such. Why these two dots are drawn? Why these two dots are drawn? It's a coordinate bond. Nitrogen is Yeah, because nitrogen is giving the electrons. So please keep in mind this thing. And if you forget to mention positive charge, you will not be getting marks. Please keep in mind. Okay. So this only we should keep in mind. So now, okay. So this also I will tell the basic thing. If valence electron is 1, 2, 3, then it is a metal. 4, 5, 6, 7, 8, then it's a non-metal. So this way we can classify metal and non-metals. Now, can you tell which is the formula between E and G? Please tell the answer. What is the formula between E and G? E is atomic number 19 and G atomic number 17. EG. Ionic bond. Yeah. Ionic. Yes. Correct. So your answer is correct. EG. So you should be clear that you should write EG, not GE. So sometimes students write GE also. So that would be wrong. Okay. So keep in mind that. Now let us do this question, which will come in your screen. Covalent compounds, bond is formed due to. This is everyone knows. Sharing. Yeah. It is sharing. Electrovalent compounds have high. Okay. Molecule dash contains triple bond. Okay. Nitrogen. Right. Okay, fine. Let us go ahead with the next question. So next question here is, during ionization, please see, this is very important question. During ionization, metal lose electron. This change is called as oxidation. Yeah, actually, fine. Next 15th question. Bond formed by shared pair of electron. Each bonding atom may come from contributing one electron to the pair. So answer is written here. Single covalent. Answer is written single covalent. Please see, sometimes students are writing covalent bond, but actually this is not the right answer. When they told each electron means one electron contribution, so it means it is a single covalent bond. If they say 2 electron contributed by one, so that is double. If they say 3 electron contributed by single, that's triple. So please be careful for small things are there where students can lose marks. Okay. A bond formed by shared pair of electron, when both electrons coming from the same atom, so then it is Coordinate bond. right? So this small thing you have to keep in mind. Okay. So right.
So now let us take up this question. What is the answer? Property which is a characteristic of electrovalent compound. It has a high melting point. It has a high melting point. High melting point. Very Just good. high melting point. So fine. So that's all. So now let us this question. Okay, okay. We can take up this question also. Electrons are getting added to element Y. Whether Y is getting oxidized or reduced. Reduced. Yeah, reduced. Yes, reduced. Okay, reduced. What change will Y have after addition of electron? It will become anion. What change will Y have after the addition of electron? It will become negatively charged. Yes. Means answer is written. Answer is written actually. You have told correctly. It will become negative charge or it will become anion. Right? Now this question, answer is written here also. Which electrode will it migrate? Anion will move towards anode. Anion will move towards anode. Right? So this is clear. Fine. So that's okay. Now, so this question is there. For example, acid dissolves in water to form positive charge ion. Which positive charge ion? Hydrogen. Yes. So can you see here the previous question of ammonium and hydronium? There two lone pairs are there. Are you able to see? Two lone pairs. Yes, sir. So two lone pairs should be there here. Means these electrons are coming from oxygen and positive charge must. We should keep in mind while drawing the structure. If you miss positive charge, then you lose marks. Okay. Now, let us go ahead with the next question. Element Q and S reacts to form an ionic compound under normal condition. Which physical state of the compound QS? Ionic compound have physical state will be what? Solid only, no? Can Q and S both be metals? No. No, it can't be. So now it is the condition of ionic bond. It can be a condition of ionic. Now what you are feeling? Okay. So anyone from your side, you can just summarize for the ionic bond, small points. Anyone, one of you can raise hand. Okay. Sir, I have a doubt. No, money boy. Yeah, I will clear your doubt. Yeah. Please ask first. Yes. Actually, my doubt is that two metals cannot form a covalent bond, but can two non-metals form a covalent bond? I didn't get your answer. You told that metals do not form covalent compound and non-metals can form ionic compound. That is the question. So my question is that two metals cannot form covalent bond, but can two non-metals form a covalent bond? Non-metals are forming covalent bond only, like Cl covalent. Okay. Yeah. One more very important question come into my mind when you ask this question. Okay. Let us take the example of NaCl. NaCl is ionic? Yes? Yeah. Okay. If you take NaH, what is the bond? NaH, what type of bond is there? Sodium hydride. Ionic. Yes. Covalent. Ionic. NaH is ionic bond, hydrides. Okay. If you It take, will share with hydrogen. yeah, what happened? It will share the electron, one electron with No, hydrogen. actually, what is there? No, my dear, what is there? Basically, no, Where everything. hydrogen acts with As I told you already, nothing is covalent, nothing is ionic. Always it is a percentage character, percentage ionic, and percentage ionic character depends on the difference in the electron activity. If more is the difference in the electron activity, the more ionic character will come. This is the main thing. Okay. So now you just imagine the situation. Just think just what I'm saying. H and H bond is covalent. Difference in the electron activity 0. Right? Now if you combine like H and F, it becomes polar. Why polar? Because fluorine is more electron active than H. If you change into NaF, it becomes ionic. Why ionic? Because the difference in the electron activity has risen more than 1.8. Got my point? So the difference in the electron activity causes the bond to be ionic or covalent. So if the difference in the electron activity is becoming 0, then bond will become non-polar covalent compound. Non-polar means it exists as molecules. It do not form ions. Right? This is the main concept. Okay. So let us move ahead for the next part. So first rule was there. Second rule, we need to be patient. First rule was there. We need to work. Whether we low or hard, we should try.
third is Lord, I surrender. Means the God is the ultimate truth. We need to follow His directions. Okay. Acid, base, salt. This is the chapter. So now I am not going into the syllabus part. I will go directly and jump to the main part. Analytical chemistry and acid, base, salt. Directly questions will be asked. The basic thing here it is, any substance which gives us H positive ions, that is regarded as acid. Any substance which gives OH negative ions in the aqueous solution, that is regarded as a base. And acid plus base combine to form salt. And so salts, different salts can be expected depending on the acid and base combinations. Acidic salt, basic salt, these two are there in your syllabus. Apart from that, normal salt and that normal salt and one more salt is there, NaHSO4. What is that salt? Acid, acidic. Yeah, that salt is there. Okay, so these two salts are there. So that will take up as far as the questions are coming. So basic thing, if you see this slide, most of the things has been covered in terms of acid. Acids are type of hydra acids are there, HCl, HBr, HI. Okay, I would like to ask one question from you. Which will be most acidic? HCl, HBr, HI. Which will be most acidic? HI. Yeah, absolutely right. Because the bond length between H and I would be maximum. Therefore, acidic character will be maximum. Right? So similarly, we are having strong acid and weak acids. Strong acid like HCl, HNO3, H2SO4, right? H3PO4 as well. And weak acid as such as carbonic acid and acetic acid, formic acid, these are weak acids. And what is the main characteristic of weak acids? They are partially dissociated or partially ionized. Partially ionized means alpha value is very less. Alpha value is less than 40% we say normally. But alpha value is less, and therefore it contains ions as well as molecules. Means it is not 100% ionized or 100% dissociated. So that's why word we are using that alpha is less than 40%. Okay, so it contains ions as well as molecules. In terms of strong, it contains only ions. This type of questions will be asked in the exam. Okay, it is related to electrolysis, but it is linked with acid base salt as well. So base gives OH negative ions. NaOH is a base, KOH is a base, which is a strong base, and it is completely dissociated to give ions, and it gives only ions. We should use the word. And weak base like ammonium hydroxide, and these are weak base. Calcium hydroxide also considered as weak base, and that is also known as slake lime. And insoluble bases are also there. Like this, I would like to remind you about this. One of the mnemonics is there. We are going to take up now, so you will be finding easy to remember all these things. Copper, iron, and zinc. Okay, so that we are going to take up now. And so one thing you need to remember is like just see, remember this: Ku ni man ko fikar. Ku ni man ko fikar. Ku means copper, nickel. Ku ni nickel. Man means manganese. Okay, cobalt, and Fe means iron, and chromium. So these are colored salts. Ku ni man ko fikar. These are colored salt. You can easy to remember that. These are colored salt: Ku, copper, nickel, Ni, manganese, zinc, and Fe, iron, chromium. So these are the colored salts. Okay. So now acid plus base give rise to salt and water. This is a neutralization reaction. This is exothermic reaction. And now, so two types of basicity also concept is coming. Like basicity means how many H plus is given by an acid. Okay, if it is 1, basicity 1 in case of HCl, nitric acid, and basicity is 2 because H2SO4 can give 2 positive H plus ions. Okay, similarly, so NaOH when reacted with H2SO4, it can form NaHSO4 as well as Na2SO4. So when you talk of NaHSO4, this is acid salt, and when you talk of Na2SO4, that is a normal salt. This question can be asked in your syllabus. Is there in syllabus like normal salt and acid salt. And next is the formula making should be clear. Here students start feeling it difficult because of formula. We should know about the formulas of sulfate, carbonate, phosphates and all that. Okay. So if you see the right hand side, very important reaction is written there. NaCl plus H2SO4 concentrated, temperature less than 200 degrees Celsius give rise to NaHSO4 plus HCl, and which is a acid salt. NaHSO4 is acid salt. Similarly, NaCl when treated with concentrated sulfuric acid, temperature greater than 200, it gives rise to Na2SO4 and HCl. This is a normal salt. So when you remember about acid salt and normal salt, you should remember about temperature to the less than 200 and temperature greater than 200 also, because you are covering the HCl gas chapter also. Okay.
So similarly, basic salt is having one extra OH. Acid salt is those salt which is having one H extra, and basic salt are those which are having OH extra. So now you see, think of calcium hydroxide. Calcium hydroxide is a base. If you remove one OH with Cl, one OH is extra. So that is known as basic salt. Okay. For example, we are having, let us say, copper CuCl2. So CuCl2, one Cl is replaced with OH. So CuOHCl. This is a basic salt. Similarly, if you take any salt, like let us say FeOH thrice, let us say we take this salt. So now if you write FeOHCl2, that is a basic salt, right? So you can make any salt basic salt by replacing any negative ion with OH. Okay, so this is way how we can find out any basic salt. Okay, so now let us move ahead for the next part. So you can see very important this one, reagents. Reagents means methyl orange. Methyl orange, acidic medium it will be red, and alkaline medium it will be yellow, and phenolphthalein colorless pink. This is a story behind this phenolphthalein. You know, earlier days, no, when it was 1980s, 85, there was विजिलेंस बोर्ड होता था। वो क्या करते थे, जब रिश्वत लेने के लिए कोई पकड़ा जाता था ना, उसको क्या करते थे, जब रिश्वत कोई लेता था उसके फिनोल्फिन लगा देते थे, नोटों को ना फिनोल्फिन लगा देते थे पाउडर, ठीक है। तो जब बंदा रिश्वत लेता था उसके हाथों में ना फिनोल्फिन लग जाती थी, ठीक है। तो वो क्या करते थे, उसको पकड़ना होता था तो वो NaOH का सोल्यूशन लेके आते थे, उसके हाथ उसमें डाल देते थे, उसको बोलते थे रंगे हाथों पकड़ा गया। ओके, got it this story? So this story is for phenolphthalein. So phenolphthalein की ये स्टोरी है, रंगे हाथों पकड़ा जाना, right? Got it? So now next is blue litmus red to blue, and alkaline phenolphthalein. This question can be asked. alkaline phenolphthalein की क्वेश्चन आ सकता है आपको। alkaline phenolphthalein है जो, उसका जो है कलर क्या होगा, जैसे एसिडिक मीडियम में कलरलेस है, मतलब पिंक, तो ऐसे आपको पता होना चाहिए कि alkaline phenolphthalein पिंक कलर का होता है, पिंक टू कलरलेस हो जाएगा, पिंक टू पिंक रहेगा, ठीक है। pH स्केल है 0 to 14 है, लेस देन 7 एसिडिक, बेसिक, ग्रेटर देन 7 रेड लिटमस। ओके, so these are some gases, very important. Carbon dioxide, odorless gas. Carbon dioxide is acidic gas or neutral? Acidic. Okay, if I will ask you SO2 and SO3, which is most acidic? SO2 and SO3, which is most acidic? More acidic, because. So please remember, yes, right. So Paul has written correctly, SO3. You have to check the valency, my dear. More is the valency, more is the acidic. Now you check CO and CO2. Why we say CO is neutral? Why we say CO is neutral? Because it is having +2 valency, and CO2 valency is +4. More is the valency, more is the acidic, correct? Please remember that. Okay, is it clear? Now let us talk of reddish brown aqueous. Reddish brown is NO2, yellowish green is chlorine, and HCl is colorless but pungent, choking. Similarly, chlorine is also pungent, suffocating, and suffocating word when it's coming, then colorless is coming, then SO2. Okay, burning sulfur, SO2. So ammonia is pungent smell, H2S is rotten gas. These are the areas we need to work out. Oh, I think, what is the time now? 1 hour over. Okay, so what I couldn't able to find the time. Okay, I will be closing after this. This is very important thing. Please see that. Okay, ये देखिए जरा, बहुत अच्छा है। इसको आपने याद कैसे करना है, काफी कप जरा पकड़ाना। देखो ये लिखा हुआ है, स्नैपशॉट भी आप ले सकते हो। काफी कप जरा पकड़ाना, देखो फटाफट जल्दी करो। काफी कप जरा पकड़ाना, इसको याद रखना आपने। का मीन्स कैल्शियम, ठीक है। फी मीन्स आयरन, फेरस, ठीक है। फेरस के बाद फेरिक भी आ गया, फेरस फेरिक। उसके बाद कप का मतलब है कॉपर, ठीक है। जरा मीन्स जिंक, कप का पी भी है, पी लेड का है, पी लेड है, कप मीन्स पी लेड। जरा मीन्स जिंक। पकड़ाना, वो तो ऐसे वर्ड यूज कर दिया हमने, पकड़ाना मीन्स अमोनियम, ठीक है। तो ये है हमारा न्यूमेरिक्स, काफी कप जरा पकड़ाना, ठीक है, याद रखो बेटा। NaOH के लिए एक्सेस ऑफ NaOH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, वेरी इंपॉर्टेंट। कैल्शियम जब रिएक्ट करते हैं NaOH से, कार्डी व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता है,
जब एक्सेस में होता है स्पेरिंगली सॉल्युबल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और कैल्शियम वीक बेस के साथ रिएक्ट ही नहीं करता, नो रिएक्शन विद वीक बेस, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ कोई रिएक्शन नहीं है। सेकंड, फेरस विल गिव dirty green precipitate with NaOH and in excess it remains insoluble. Similarly, ferrous will give dirty green insoluble, means same ही है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन सेम है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन सेम है, नो चेंज। नाउ इफ यू टॉक ऑफ फेरिक, रेडिश ब्राउन एंड इनसॉल्युबल, रेडिश ब्राउन इनसॉल्युबल, इट मींस फेरस फेरिक में कोई चेंज नहीं आ रहा, दोनों केस में सिर्फ कैल्शियम के साथ चेंज था, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो है व्हाइट प्रेसिपिटेट थे और एक्सेस में स्पेरिंगली सॉल्युबल था। अभी अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ उसने रिएक्शन ही नहीं दी। फेरस के साथ डर्टी ग्रीन इनसॉल्युबल, डर्टी ग्रीन इनसॉल्युबल, फेरिक के साथ रेडिश ब्राउन इनसॉल्युबल, रेडिश ब्राउन इनसॉल्युबल, राइट। कॉपर साल्ट, कोप्रिक, पेल ब्लू प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल एंड पेल ब्लू सॉल्युबल। एक क्वेश्चन आता है पेपर में आपको, व्हाई अमोनिया इज नॉट स्टोर्ड इन कॉपर वेसल्स, ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको पेपर में, व्हाई अमोनिया इज नॉट स्टोर्ड इन कॉपर वेसल्स, क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज अमोनिया मेक द कॉपर सॉल्युबल, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में वो सॉल्युबल हो जाता है, वो कॉम्प्लेक्स बनाता है, टेट्रामीन कॉपर कॉम्प्लेक्स। तो समझ लीजिए, तो ये पेल ब्लू अमोनिया के केस में वो सॉल्यूशन बना दिया, डीप ब्लू इन एक्सेस, वो सॉल्युबल हो जाते हैं, डीप ब्लू कलर सॉल्युबल हो जाता है। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर, डीप ब्लू सॉल्युबल, फाइन। लेड साल्ट क्या होते हैं? चॉकी व्हाइट सॉल्युबल, चॉकी व्हाइट सॉल्युबल, राइट। अभी देखो इस केस में सॉल्युबल क्यों हो गया? बिकॉज इट इज अ फॉर्मेशन ऑफ सोडियम प्लम्बेट, सोडियम प्लम्बेट बता सकते हैं कोई कॉम्प्लेक्स कौन सा कंपाउंड है? नॉर्मल साल्ट नॉर्मल है कि एसिड है कि कॉम्प्लेक्स है? कॉम्प्लेक्स। वो सॉल्युबल इसलिए है कॉम्प्लेक्स के लिए, मैंने आपको पहले बताया था कि कॉपर इज सॉल्युबल इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड बिकॉज इट इज फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स। सो हियर उसमें सोडियम प्लम्बेट बना रहा है, सोडियम प्लम्बेट Na2PbO2, so sodium plumbate is formed, that's why it is a complex forming, that is soluble. Similarly chalky white insoluble, so जिंक के लिए जेलेटिनियस व्हाइट यूज करते हैं वर्ड, soluble है एक्सेस में, अमोनियम के लिए भी soluble है एक्सेस में, ठीक है। अमोनियम आयन, अभी देखो सिंपल सी रिएक्शन याद करो यार, अमोनियम क्लोराइड प्लस NaOH, इट गिव्स NaCl वाटर एंड अमोनिया। कोई भी अमोनियम साल्ट्स है, whatever the ammonium salts are there, when added with NaOH, बेस ऐड करोगे तो अमोनिया गैस आएगी विच इज अ पंजेंट स्मेल। और अमोनिया के लिए टेस्ट, कौन से टेस्ट हो सकते हैं? एक तो ग्लास रॉड डिप्ड इन HCl का हो सकता है, एक हो सकता है कि आपका नेस्ले रीजन का टेस्ट हो सकता है, ठीक है, एक आपका जो टेस्ट हो सकता है कोई लिटमस का टेस्ट हो सकता है, ठीक है। सो दीज आर द टेस्ट वेरी, बट अपार्ट फ्रॉम दैट नेस्ले रीजन इट टर्न्स ब्राउन, ठीक है, जो है ब्राउन पीपीटी आते हैं उसके नेस्ले रीजन, ठीक है। दिस वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको कई तरह के क्वेश्चन आएंगे, मतलब कि मैं अभी बहुत सारी चीजें नहीं कर पाऊंगा अभी, क्योंकि बिकॉज ऑलरेडी टाइम इज 6:30 7:30, आपका 1 आवर से ज्यादा हो गया। सो आई वुड स्टॉप शेयरिंग माय स्क्रीन नाउ, बट बिफोर स्टॉपिंग, या प्लीज Sir, I have one doubt, sir. या नो प्रॉब्लम, यू कैन आस्क। Sir, like sir, you have sent the test series. There was question like that. What the AlCl3 is which example of bond? Okay, fine. AlCl3 बेटा, it is having both type of bonds. अभी AlCl3 का क्या चक्कर क्या है, उसमें आयनिक बॉन्ड भी है और कोवलेंट बॉन्ड। AlCl3 में आयनिक बॉन्ड भी है, कोवलेंट बॉन्ड भी है। क्यों? अभी देखो AlCl3 अगर आप गैस स्टेट में रखोगे तो वो कोवलेंट है, अगर AlCl3 को गैस स्टेट में होगा वो कोवलेंट है। अगर AlCl3 को वाटर में डालोगे आप, ठीक है, वाटर में डालने से क्या होता है कि उसमें वाटर में उसकी आयनाइजेशन हो जाती है AlCl3, ठीक है। AlCl3 का आयनाइजेशन होने के कारण वो आयंस एक्ट करते हैं, तो इसलिए हम बोल देते हैं उसको कि वो आयनिक कंपाउंड है। तो उसकी जो है स्टेट मतलब कि उसका जो क्या सॉल्वेंट है वो डिपेंड करता है कि वो क्या, मतलब कि उसको क्या बनेगा। तो इट कैन एक्ट एज बोथ आयनिक एज वेल एज कोवलेंट, राइट। आपकी बुक में है HCl भी होगा सर, फिर तो HCl भी होगा, HCl गैस है तो वो कोवलेंट है, जब हम पानी में डालते हैं वो ऐसे नहीं होता, वो ऐसे नहीं होता, वो AlCl3 का स्पेशल केस है, वो डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से होता है, ठीक है, डिफरेंस। अगर आप प्लस में जाओगे ना फिर आपको पता चलेगा कि उसका क्या चक्कर क्या है, ठीक है। AlCl3 का चक्कर अलग है, HCl का अलग है सिस्टम,
ठीक है. अभी क्या है कि मीन्स होपफुली यू हैव understood anything. Who will just take, I want to just summarize all the thing, okay, before closing. And one thing I would like to tell you, the screen आपके पास कर दी आपने. तो अगर आप जो है आपको लगता है कि जो है मैं कुछ इसमें हमने काफी टेस्ट डाले हैं 10th ग्रेड के, सो यू कैन जस्ट चेक दैट टेस्ट. कुछ मटेरियल्स हैं, फ्री मटेरियल्स हैं, आप सर्च कीजिए और उसको ना रेटिंग आप कर दीजिएगा अगर मतलब ये आप कर सकते हैं. So you should just rate the app. Okay, fine. So I am not able to cover each and everything. So, but a few portions we have covered. So thank you for everyone. But still, you can ask questions. I am here.